जामनगर में है कृष्ण परंपरा।
आपकी भी शायद बहुत आओ ना अभी हमारी सभी उससे बात हुई थी ज्योति सर कितने टाइम क्या अरे यार गाली दे रही है हाँ अरे मुझे पता है कोई मुझे कौन होगा कहाँ है वहीं बैठे हैं सामने बैठे हैं सामने से नहीं आ सकते सामने सामने से छोटू आ रहे हैं छोटू आ रहे हैं वो तो उसके बाद घर पे आ रहे हैं आपको देखिए वो फोन दे दो Good evening, everyone. Our distinguished guests have arrived, and I request everyone to kindly be seated. We are shortly going to begin with the award session of DAMODARSHREE 2022. I request everyone to switch off their mobile phones or keep them in silent mode. Thank you. तो मैसेज कैसे भेजी थी फोन पे था दिखा रहा है हम पीछे बैठे
दो लोग हैं कंटेस्टेंट है यहाँ पे। हाँ ये सीट और लैपटॉप अपने वो अपने अभी तक नहीं करना दूसरी का लैपटॉप ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा पीया पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सदनलाल सावलदास खन्ना महिला महाविद्यालय व सारस्वत खत्री पाठशाला सोसाइटी द्वारा समेकित रूप से आयोजित दामोदरश्री राष्ट्रीय विशिष्टता सम्मान समारोह में पधारे व इस
पाठशाला प्रेक्षागृह में आसन अभ्यागतों को मेरा डॉक्टर सौम्या कृष्ण व मेरी सह संचालिका डॉक्टर रिया मुखर्जी का आदरयुक्त नमस्कार। दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान के द्वितीय सत्र में विशिष्ट व्यक्तित्व श्री विकास स्वरूप पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार को मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त कर हम सभी आह्लादित व गौरवान्वित हैं। हम सब आपका समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी से आग्रह है कि कर्तव्यों के साथ अपना अभिवादन संप्रेषित करें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से पधारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्राध्यापकों, प्रशासनिक अधिकारीगण, संगठन महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष, प्राचार्य एवं शिक्षकों का एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय की ओर से स्वागत एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। साथ ही हम स्वागत करते हैं महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, सारस्वत खत्री पाठशाला सोसाइटी के सम्मानित गणमान्यों व प्रोफेसर दामोदर दास खन्ना के समस्त कुटुंबियों का, जिनकी प्रेरणा से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। To mark the beginning of the program, let us now witness the Nritya Madhurya by the students of the Cultural Club of SS Khanna Girls Degree College. This dance song is an expression of the human quest for the divine, the oft formless, infinite, unfathomable divine, whose existence is often refuted, and yet, more than often, imagined and celebrated in myriad forms. Let us come together to participate in the pursuit of this ephemeral divine through Madhava's song, Thara Bina Sham.
शरद पूनम की रात में है चारों ओर खिली चांदनी, तू न आए जो श्याम, रास भाई न श्याम। इस मनोरम नृत्य माधुरी की प्रस्तुति को मूर्त रूप देने वाली छात्राएं हैं आकृति सिंह, वैष्णवी मालवीय, प्राची चौरसिया, सारिका निषाद, सुभी यादव, दीपिका सिंह, आशी सिंह, नैन्सी मिश्रा। कृष्ण स्तुति पर पंक्तियों को गे व लय आबद्ध करने वाली छात्राएं थी अदिति सिंह, दिव्यांशी मालवीय, श्रेया सिंह, प्राची, प्रेरणा पांडे, बिंदा कुमारी, श्रद्धा सिंह, मधु तिवारी और नंदिनी बिंदा। वाद्य यंत्रों के साथ सहयोग कर रहे थे डॉक्टर पार्थ डे, डॉक्टर बलदीप कौर, श्री जयशंकर चतुर्वेदी व दीपक मालवीय।
संप्रति हम कार्यक्रम के उस बौद्धिक चरण पर आ गए हैं जहां हम अपने अतिथियों के चिंतन का भाषाई संप्रेषण कर ज्ञान के निकष को प्राप्त करेंगे। अतः सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर लालिमा सिंह से निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आए व अपना आसन ग्रहण करें। छात्र परिषद की प्रतिनिधि अहमद अजीज से निवेदन है कि आप मैम को मंच पर आने में सहयोग प्रदान करें। श्री अमित खन्ना, सारस्वत खत्री पाठशाला सोसाइटी से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर आए व अपना आसन ग्रहण करें। छात्र परिषद प्रतिनिधि शगुन खंडपाल से निवेदन है कि आप सर को सहायता प्रदान करें। निवर्तमान न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय श्री अरुण टंडन सर से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आए। छात्र परिषद प्रतिनिधि मसराबा मकसूद से निवेदन है कि आप सर को मंच पर आने में सहयोग दें।
अध्यक्ष डॉक्टर आशा सेठ मैम से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मंचस्थ होकर हमें कृतार्थ करें। छात्र परिषद की उपाध्यक्ष पुष्पिता बैनर्जी से निवेदन है कि आप मैम को मंच में आने में सहयोग प्रदान करें। तदनंतर आज के मुख्य अतिथि श्री विकास स्वरूप, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मंचस्थ होकर हमें गौरवान्वित करें। छात्र परिषद अध्यक्ष मुस्कान कुशवाहा से निवेदन है कि आप सर को मंच तक लाने में सहयोग प्रदान करें। As we move to the next segment of the program, I request our respected principal, Professor Laila Singh, to extend a warm welcome to all the esteemed guests, dignitaries, and invitees present here. Some memories are unforgettable, ever vivid and remain in our heart. In a lifetime, we come across such rare occasions and extraordinary personalities who leave their indelible mark on the sands of time. And today, we are gathered in this auditorium in reverence to and acknowledgement of the unceasing gratitude towards the founder of this college, Professor the late D.D. Khanna. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you on the 10th DAMODARSHREE National Award for Academic Excellence. Thank you all for your kind presence. It's really heartening to see the spirited exuberance displayed by the contestants in the presentation or the interactive session which was held in the morning. The conglomeration of the ideas, thoughts, innovation, and hopes make the positivity almost tangible amongst us. The atmosphere has turned jubilant by the presence of Sri Vikas Swarup, Indian diplomat and writer. The presence of Sri Vinod Swarupji, father of Sri Vikas Swarup, has doubled our joy. Sri Vikas Swarup is a former secretary at the Ministry of External Affairs, Government of India. Sir has previously served as High Commissioner of India in Canada and has been the official spokesperson of the Ministry of External Affairs. He is a renowned author of With Q&A, Six Aspects, and The Accidental Apprentice being his famous works. To apprise the audience, Sir was born in Prayagraj and is an alumni of the University of Allahabad. Sir, from his very childhood, had the qualities of creativity and leadership, innovation and writing. Being the eldest child in his joint family, he was a role model for all his young siblings. His accolades are innumerable. But what inspires me the most is that despite being immersed in his official work, Sir makes time to write, and his several works are a testimony to this. Very often we keep complaining that we do not have time. But inspired by Sir, I can say that if you have the passion about something, you can definitely find time for it. Sir, your presence has added grandeur to this occasion, and it's a great matter of pride for us that you are here and lending dignity to this event. With your blessings, this humble effort of ours will reach its greatest pinnacle.
I welcome the members seated on the dais, our chairperson, Dr. Rasha Seth, Secretary Sri Amit Khannaji, Chairman of the DAMODARSHREE National Award for Excellence Committee, Justice Arun Tandonji. I also welcome the esteemed members of the Saraswat Khatri Pathshala Society, in particular, Mrs. Nirmala Tandon, proud daughter of late Professor D.D. Khanna, and Sri Anil Tandonji, who came all the way from Delhi to be here with us this evening. I also extend my welcome to the Honorable Judges of the High Court, distinguished faculties of the University of Allahabad, esteemed prominent citizens of the great city, and all others. I'm very happy to see my senior colleagues, Dr. Asha Upadhyay ma'am, Mrs. Krishna Banerjee, who are here with us this afternoon. We are indeed delighted to have you with us this evening. Before I leave this podium, I feel it would be unfair on the part of the DAMODARSHREE Working Committee. I would like to share the feelings of the committee before all of you. That this grand display of academic talent and intellectual brainstorming, in short, the DAMODARSHREE would not be what it is without the able and capable guidance of our chairman, Justice Arun Tandon. Thanks to his vision and indomitable spirit, that the DAMODARSHREE is being celebrated and acknowledged as a milestone in recognizing academic excellence among the youth. And the most beautiful experience which we had in working in the DAMODARSHREE committee was the beauty of teamwork. Thank you, sir. And in the end, a warm and cordial welcome to one and all who are seated in this auditorium. Thank you. धन्यवाद मैम, आपके स्नेहिल शब्दों के लिए हम आभारी हैं। संप्रति दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान के प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर दामोदर दास खन्ना का स्मरण करते हुए व उनके प्रति महाविद्यालय का स्नेह व सहृदयता अभिव्यक्त करते हुए प्रोफेसर दामोदर दास खन्ना की आत्मजा श्रीमती निर्मला टंडन व श्री अनिल टंडन से अनुरोध है कि आप प्रोफेसर खन्ना के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करें। इस कार्य में सहायक आचार्य अंग्रेजी विभाग डॉक्टर रुचि मालविया से अनुरोध है कि वे सहयोग प्रदान करें। बीएड संकाय की छात्र कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष दीक्षा अग्रवाल से निवेदन है कि वे इस कार्य में अपने दायित्व का निर्वहन करें। यहाँ मैं यह बताना चाहूंगी कि श्रीमती निर्मला टंडन व अनिल टंडन के प्रति महाविद्यालय विशेष आभारी है, क्योंकि आप महाविद्यालय के आमंत्रण पर दामोदर श्री कार्यक्रम हेतु दिल्ली से पधारे हैं।
Mrs. Khanna remains eternally grateful to Mrs. and Mr. Nirmala Tandon. Dear Ma'am and Sir, we request you to kindly stay back on the stage to give away the organizer's prize. I request Dr. Sippy Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, to kindly assist Mrs. and Mr. Tandon. This year's organizer's prize goes to Ms. Pratima Singh of University of Delhi. Please give a big hand to Ms. Pratima Singh. The award carries a prize money of rupees 30,000. Ms. Pratima Singh of University of Delhi is being awarded the organizer's prize. Ms. Pratima Singh. यद्यपि विजेता प्रतिभागी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें शुभकामनाएं देंगे। आइए इस कार्यक्रम को पुनः मंचस्थ अतिथियों की ओर केंद्रित करें। प्रोफेसर दामोदर दास खन्ना के दृढ़ संकल्प, सकारात्मक मनोयोग एवं सार्थक प्रयास के परिणाम स्वरूप सदनलाल सावलदास खन्ना महिला महाविद्यालय का जो स्वरूप आज आप देख रहे हैं, उसका अपना एक विस्तृत इतिहास एवं यात्रा संघर्ष है। हमारे बीच एक ऐसा ही व्यक्तित्व विद्यमान है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को न केवल उसका जीवंत साक्षात्कार किया है, बल्कि स्वयं जिया है। खन्ना महिला महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर आशा सेठ मैम से अनुरोध करूंगी कि वे अपने सारगर्भित उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री विकास स्वरूप जी और उपस्थित सभी अभ्यागतों का मेरी ओर से हार्दिक स्वागत है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और मुझे बड़े संतोष का अनुभव हो रहा है। हर साल होता ही जाता है, क्यों? 48 वर्ष पहले जब इस महाविद्यालय का जन्म हुआ था, तब से पहले प्रवक्ता, फिर प्राचार्य और फिर अवकाश प्राप्त करने के बाद भी आज तक किसी न किसी रूप में मैं महाविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और बुलेट ट्रेन की गति से बढ़ती हुई इसकी प्रगति की प्रत्यक्षदर्शी हूँ। संक्षेप में इसकी चर्चा मैं आज करना चाहूंगी, विशेषकर युवा वर्ग से। सन 1975 अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में कला संकाय के मात्र 6 विषयों की अनुमति के साथ ये महाविद्यालय सारस्वत खत्री पाठशाला सोसाइटी की छत्र छाया में खुला था। महाविद्यालय तो खुल गया था। समाज सेवा के भाव से हम 3 शिक्षिकाएं भी आ गई थी, पर छात्राएं तो थी ही नहीं, पढ़ाते किसको? दूर दूर तक फैली इस घनी बस्ती में 12वीं कक्षा के बाद महिलाओं को ना पढ़ाने के 100 बहाने थे। मसलन गरीबी, घर गृहस्थी की समस्याएं, दकियानूसी विचार और एक ही बात,
अरे औरतों को इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? और तू डल मैं बात। महाविद्यालय के संस्थापकों का समाज और देश के हित में दृढ़ संकल्प था कि हम तो इन महिलाओं को भी पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। उधर 100 बहाने थे ना पढ़ाने के, इधर 100 बहाने जुटा लिए गए पढ़ाने के। जैसे सबकी फीस माफ कर दी गई, उसका ऐलान किया गया। प्रबंध तंत्र ने महाविद्यालय का समय उनके अनुकूल निर्धारित किया और इसके साथ ही साथ छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई जो घर घर जाकर दकियानुसी विचारों की गुत्थी को सुलझाने का कठिन काम करती थी। तो इस तरह संभाला उस विषम परिस्थिति को। तो एक ही महीने में 27 छात्राएं बरामद कर ली गई और प्राध्यापन कार्य शुरू हो गया, सत्र बच गया। मैं बताना चाहूंगी कि जिन छात्राओं को आगे पढ़ने की इजाजत घर से नहीं मिल रही थी, उनमें आगे पढ़ने की और आगे बढ़ने की इतनी अदम्य इच्छा थी, इतनी बलवती इच्छा थी कि सालों से छूटी हुई पढ़ाई और घर में प्रतिकूल वातावरण होते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत की और महाविद्यालय का पहला परीक्षा परिणाम 87% रहा। हम लोगों ने ऐसी आशा नहीं की थी, लेकिन वो छात्राएं घर जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि यहाँ बैठे और कहती थी और पढ़ाइए। सैकड़ों की संख्या में 12वीं पास छात्राओं के घर महाविद्यालय ने अपने परिचय के साथ बधाई पत्र भेजना प्रारंभ किया। जहां तहां से पते जुटाए गए, जिससे प्रभावित होकर चुंबकीय गति से छात्राएं बढ़ने लगी और बस महाविद्यालय देखते दौड़ने लगा। 3-4 वर्ष बाद ही हमारी एक छात्रा ने बीए प्रथम वर्ष में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। 3-4 वर्ष बाद ही प्रबंधक, मार्गदर्शक और कप्तान के रूप में प्रोफेसर डी खन्ना जी और उनके सहयोगी निरंतर हमारे साथ थे। खन्ना सर उन्होंने एक लौह व्यक्तित्व के थे। उनका कुछ ऐसा जज्बा था कि वो जिधर भी प्रयास का हाथ फैलाते थे, सम्मान में सहयोग के लिए दानदाता भी आगे बढ़ाते थे। सब कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते थे कि जिस तरह मांग रहे हैं, जिस निष्ठा से काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ देना चाहिए और मदद करनी चाहिए। बहुत आर्थिक तंगी थी, शुरू में बहुत आर्थिक तंगी थी। कमरे नहीं थे, पंखे नहीं थे, स्टाफ बहुत कम था, पर उनकी प्रेरणा से कितनों ने पंखे दान किए, छात्रवृत्तियां, शुल्क मुक्तियां दी, यहाँ तक कि बड़ों की स्मृति में भवन तक दान दिए, कमरे बनवाए। विश्वविद्यालय हो या कोई अन्य कार्यालय, अपने सहयोगियों के साथ कठिन से कठिन कार्य को भी वो सफल बना लेते थे। और जल्दी ही वो दिन भी आया जब विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में प्रथम 10 में 3 छात्राएं हमारे महाविद्यालय की थीं, जिसमें एक छात्रा होती जिसको सर्वाधिक अंक मिले थे और उसने बीए में टॉप किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 10 में 3 छात्राएं हमारे महाविद्यालय की थी। मुश्किल से 5-6 साल हुए थे कॉलेज को खुले हुए। स्थापना के 5 वर्ष बाद ही महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में आ गया। सन 1994 में विज्ञान संकाय की स्थापना हुई। आर्थिक अभाव में प्रयोगशालाओं का निर्माण बड़ी टेढ़ी खींची। वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। हौसले पस्त हो रहे थे, लेकिन खन्ना सर बड़े सहज थे। खन्ना सर का मानना था
कि पक्के इरादे के साथ अगर किसी शुभ कार्य करने का संकल्प लिया जाए तो लोग आगे जाते हैं और कारवां बनता जाता है, बढ़ता जाता है। और यही हुआ। बम्बई की दानवीर सारला एजुकेशन ट्रस्ट, उनसे अनायासी परिचय हो गया। महाविद्यालय की कार्य प्रणाली, उच्च शिक्षा परिणाम, निष्ठा और समर्पण भाव से वो इतना प्रभावित हुए कि प्रभावित होकर उन्होंने सहयोग का हाथ बढ़ाया और तब से आज तक बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देते हुए विज्ञान संकाय को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब तो यहाँ स्नातक, परास्नातक, प्राध्यापन के अलावा शोध कार्य भी विज्ञान में हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में 1 वर्षीय मान्यता प्राप्त की भी सुविधा है। इसके अलावा भारत के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्कीम स्ट्रेंथनिंग कंपोनेंट ऑफ स्टार कॉलेज में भी महाविद्यालय 3 वर्ष पहले ही चयनित हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्यूरी प्रोग्राम के अंतर्गत शोध कार्य के लिए हमारे महाविद्यालय को अनुदान मिलना भी स्वीकृत हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। न केवल विज्ञान संकाय भारी मात्रा में आर्थिक सहायता स्वीकृत करके सन 2019 में महाविद्यालय में खुले 5 वर्षीय विधि संकाय को भी अब सारला एजुकेशन ट्रस्ट ने बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए महाविद्यालय से हाथ मिला लिया है और अभी से महाविद्यालय इमर्जिंग लॉ कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय जग बना है। सारला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के लिए महाविद्यालय श्री विनय मेहरोत्रा एवं श्री चेतन मेहरोत्रा का चिर ऋणी रहेगा। सन 1975 में कहा, 1994 में विज्ञान, 19 वाणिज्य और 2004 में बीए तथा 2019 में 5 वर्षीय विधि संकाय की स्थापना तथा कई डिप्लोमा कोर्सेज के साथ 27 छात्राओं से प्रारंभ करके, ये 27 जो बरामद की गई थी उनसे प्रारंभ करके आज महाविद्यालय में 4000 से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कला संकाय में भी परास्नातक है और शोध कार्य भी चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कॉलेज विद पोटेंशियल एक्सीलेंस स्कीम के अंतर्गत महाविद्यालय पूरे 2 चरण समाप्त कर चुका है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नैक चक्र के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यह एकमात्र महाविद्यालय है जिसे पिछले 10 वर्षों से ए ग्रेड प्राप्त है। ए ग्रेड, जो अपने में एक महान उपलब्धि है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित नवाचार प्रकोष्ठ यानी इनोवेशन सेल के मानदंडों का पालन करते हुए महाविद्यालय में सन 2020-21 में नवाचार समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय द्वारा विविध उद्यमशील गतिविधियां आयोजित की गई थी। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, एक ही वर्ष में महाविद्यालय को मंत्रालय द्वारा 3.5 स्टार रेटिंग मिली है। ये गौरव भी प्रयागराज में केवल एसएस खन्ना महाविद्यालय प्राप्त कर सका। एनएसएस, एनसीसी, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सबको लेकर इतनी उपलब्धियां हैं, इलाहाबाद में एक अपनी पहचान बन चुकी है। पर सोचती हूँ क्या बोलूं, क्या याद करूं, समय की भी कमी है। इतने कम समय में इतनी प्रगति, दृढ़ संकल्प, समर्पण भाव से कठोर परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा, एकता जैसे महान जीवन मूल्यों का परिणाम है। अंत में कहना चाहूंगी, चमक रहा है सितारा कॉलेज के नाम का,
चमक रहा है सितारा कॉलेज के नाम का, मिल रहा है नतीजा इसे इसके काम का, मिल रहा है नतीजा इसे इसके काम का, मंजिलें और भी दिख रही है पानी को, इसे तो नशा चढ़ गया है सफलता के जाम का। एक संदेश आज के युवाओं को विशेषकर कि उदात्त जीवन मूल्यों के साथ सोच बढ़ाएं, लक्ष्य बनाएं, समर्पण भाव से कार्य करें, सफलता पाएं और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, ma'am, for giving us a foray into the history of SS Khanna Girls Degree College as the college keeps marching towards fulfilling its motto of empowering girl students. With this, we move towards recognizing the potential of the student participants of DAMODARSHREE 2022, who have shown unshakable grit and mettle in participating in the contest and defending their ideas in front of a panel of judges. I request Mrs. Anshika Budwar, member of DAMODARSHREE Working Committee, to kindly present the Outstanding Undergraduate Entry Award. I urge Dr. Shraddha Rai, Assistant Professor, Department of Philosophy, to kindly assist Mrs. Budwar. The Outstanding Undergraduate Entry Award of DAMODARSHREE 2022 goes to Tanu Srivastav of the University of Allahabad. Tanu Srivastav of the University of Allahabad. If you are here, please come to the stage. The award carries a prize money of rupees 30,000. Ms. Tanu Srivastav of the University of Allahabad. Ladies and gentlemen, please give up for Ms. Tanu Srivastav. प्रतिभागी के उत्साहवर्धन के लिए आप जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करें। आपकी तालियां ही प्रतिभागी का उत्साहवर्धन करेंगी। विजेता प्रतिभागी तनु श्रीवास्तव को कोटिशः शुभकामनाएं एवं बधाई। दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान के आयोजन के उद्देश्य, औचित्य एवं दैदीप्य दर्शन को उद्घाटित करने के लिए दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान की कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंग्रेजी व आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग के प्रबुद्ध आचार्य माफी चाहूंगी सर, अभी कुछ विलंब से सभागार में पहुंचेंगे, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दामोदरश्री कार्यकारी समिति के अध्यक्ष निवर्तमान न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन सर से निवेदन करेंगे कि आप दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान की विस्तृत आख्या देने का कष्ट करें। सर, डॉक्टर अरुण टंडन। जब आपके अध्यक्ष आपसे पहले बोल के चले जाएं तो उनको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आशा जी की उद्बोधन के बाद अब देखिए मैं क्या कह पाता हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विकास स्वरूप जी, उनके फादर विनोद स्वरूप जी, जो जिनके साथ मैंने हाईकोर्ट में काम भी किया है,
महाविद्यालय की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन आशा सेठ जी, लालमा जी, पार्टी के सेक्रेटरी अमित खन्ना जी, निम्मू जिनको हम लोग बुलाते हैं, नाम निर्मला टंडन है, वो उनके पति अनिल जी जो दिल्ली से आए हैं, बसंत जी सोसाइटी के हमारे प्रोमिनेंट मेंबर हैं, सेक्रेटरी साहब की पत्नी जी जो आ चुकी है उनका भी स्वागत कर लेना चाहिए हमको, अलका जी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है दामोदर्शी की, और जितने भी हमारे जजेस हैं, कपूर, जया कपूर जी, योगेश्वर तिवारी मेंबर हैं, अनिता भूपेश जी, दीप्ति जी, दीपाली पंत जी जो अपने आप में बहुत ऊंची पोस्ट पर रह चुकी हैं, डिप्टी चेयरमैन हमें करेक्ट करिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओनली जस्ट वन स्टेप बिलो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताइएगा। ऐसे विद्वान लोग हमारे साथ दामोदर्शी में जुड़े हैं। अब आता हूँ अपनी बात पे। 2 अक्टूबर 2019 इस मंच से अगले वर्ष का टॉपिक अनाउंस किया गया और टॉपिक का जो शीर्षक था वो आर यू देयर गॉड, भगवान तुम हो क्या, क्या तुम हो भगवान। नहीं मालूम था किसी को भी कि शायद टॉपिक इतना अच्छा है कि भगवान भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और ऐसे ही हुआ, रिस्पॉन्ड किया गॉड ने। भगवान की बताई हुई चीजें लिखित रूप में नहीं आती है, और रिस्पॉन्ड जब करते हैं तो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा ही हुआ। तो पहले तो भगवान ने अपनी शक्ति दिखाया कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि पिता बेटे से मिलने से दूर होने लगा, इंसान इंसान से डरने लगा, और जो पत्नियां 7 फेरे लेती हैं, जब पति को कोविड हो गया तो उसको भी कमरे में बंद कर दिया। ऐसी परिस्थितियां भगवान ने दिखा के बताया कि हम हैं। और आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे कंट्रीज जो नासा के थ्रू जाने गैलेक्सी ऑफ दुनिया देखते हैं, इस यूनिवर्स के बियॉन्ड भी कोई यूनिवर्स देखते हैं, वो भी कोविड वायरस को ढूंढ नहीं पाए। और कोविड वायरस क्या था, जो दिखता नहीं था। आप सोचिए जरा सा, हम कहाँ देख रहे थे गैलेक्सी में, और छोटे से एक कोविड वायरस को ढूंढ नहीं पाए, उसका इलाज नहीं कर पाए। और ये परिस्थितियां 2 साल तक चली। हम लोग ने बहुत कोशिश करी कि दामोदर्शी की मीटिंग कर लें, कुछ प्रोग्राम को आगे बढ़ा दें, पर एवरी टाइम वी मेड एन अटेम्प्ट कि हम लोग इकट्ठा हो बैठे। एक सर्कुलर आ जाता था कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो ऑफेंस हो जाएगा, एंड वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग। भगवान ने जो एक चीज और दिखाई, वो दिखाया कि हम हिंदू मुस्लिम मेल फीमेल बच्चा किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सबको बराबर से कोविड दे दिया और दिखा दिया अपनी शक्ति और समानता दिखा दी कि हम समान रहते हैं सबके लिए, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। पर फिर अप्रैल 2021 आया और हमारे एक बड़े प्रोमिनेंट मेंबर है अभी नायडू साहब, इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। उन्होंने एक दिन हमको फोन करके कहा कि अरुण जी कम से कम बातचीत तो चालू करिए, नहीं कर पा रहे हैं दामोदर्शी ना सही, लेकिन हम लोग मिले तो बात तो करें। अप्रैल 21 वी डिसाइडेड दैट वी मीट, और मीट करते करते हम लोग मई के एंड तक आ गए, और मई में ये हुआ कि अब दामोदर्शी को करेंगे ही। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि पेपर न्यूज कह रही है कि कोरोना वायरस वापस आने वाला है, प्लीज मत करिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग ने हिम्मत नहीं हारी, कहा नहीं चलिए बढ़ाते हैं, नोटिस भेजना और पोस्टर भेजना कॉलेजेस में चालू किया, ईमेल करना चालू किया कॉलेजेस को, एंड देन गॉड बिकेम मर्सीफुल। एंड यू विल नॉट बिलीव कि छोटे से टाइम में हमने वी हैव रिसीव्ड 309 एसेज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। हमने 19 स्टेट्स को कवर किया है, और सबसे सेटिस्फैक्टरी जो रहा है कि 319 एसेज में 208 या कुछ ऐसे लड़कियों के हैं। दामोदर्शी को चालू करने के लिए एक बहुत बड़ी सोच ये थी कि हम बच्चों को लिखने के लिए मजबूर कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के मैसेजेस ने और मोबाइल के मैसेजेस ने कितना खराब कर दिया है
YOU केवल यू रह गया है। अगर नहीं सुधारेंगे तो यू भी गायब हो जाएगा, एक उंगली आने लग जाएगी, ध्यान रखिए। तो भगवान जब मर्सीफुल होता है तो सबको बराबर से करता है, और उसने शायद दामोदर्शी पे कृपा करी, और कृपा करी तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और उससे भी बड़ी कृपा करी कि वी हैव समबडी हु हैज हिमसेल्फ बीन अ ग्रेट डिबेटर। विकास स्वरूप साहब, आई एम टोल्ड फ्रॉम द स्कूल डेज, जिस डिबेट में जाते थे उसको जीत के ही आते थे। तो आज उम्मीद करते हैं कि विकास स्वरूप जी आपका दिल जीतेंगे अपनी बातों से, इसलिए बहुत देर आपके बीच में नहीं खड़े रहना चाहता हूँ, पर एक कार्य करता हूँ। जब मैं जो भी चेयरमैन हूँ, मेरे जो 10 फाइनलिस्ट हैं उनको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मैं अपने कंपेनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके 10 पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे बुला लें, जिससे सबके सामने बताया जा सके कि कौन कौन है। अपने कॉलेज का नाम भी बताएंगे। हमारी पहली प्रतिभागी हैं दीपाली तिवारी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आदर्श सिंह, MNIT भोपाल। तनु श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। रिपन मिराज, IT कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी। सपना यादव, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। श्रेया पांडे, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। विनीता पांडे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दिया प्रदीप सैनी, मुंबई यूनिवर्सिटी। विकल्प सिंह, ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इतना ही कहूंगा कि स्टेडियम चाहे जितना अच्छा बना लीजिए, खिलाड़ी नहीं होंगे तो खेल कुछ जमेगा नहीं। तो खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप पार्टिसिपेट करते रहिए। जो जीत गए हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन कौन जीता है ये बाद में पता चलेगा। बाकी सब दोबारा हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। Thank you so much, sir. And now, दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान के आयोजन के उद्देश्य, औचित्य एवं दैदीप्य दर्शन को उद्घाटित करने के लिए दामोदरश्री राष्ट्रीय अकादमिक विशिष्टता सम्मान के कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज अंग्रेजी व आधुनिक यूरोपीय भाषा के प्रबुद्ध आचार्य प्रोफेसर मानस मुकुलदास सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बीएड संकाय के छात्र परिषद के उपाध्यक्ष दीक्षा अग्रवाल से निवेदन है कि आप सर को मंच पर लाने में सहयोग प्रदान करें।
second page. Second page. Years ago, 2011, Justice Arun involved me in this DAMODARSHREE program. I am really grateful to him and to his excellent team of is that better? No, I'm audible. I'm grateful to him and his excellent team who have made it possible to run this kind of a program for so many years. A school or a college is an atmosphere. Perhaps the most important part of education is not the prescribed syllabus, not the courses that we study, but the values that we imbibe by living in the social atmosphere of a place. The relationship between teachers and students, the values of the place, all that is imbibed by us, and that informal education is more important than what we are going to study, because that is the man-making process. The DAMODARSHREE contest, we described it somewhere as a celebration of ideas. We deliberated on what should be the nature of this contest. We didn't want a debate, because a debate is competitive. There's one person pitted against another. Even etymologically, the word debate comes from batter, to batter apart. The word discussion comes from what? Crush, to crush apart through a clash of ideas. We wanted a dialogue. We wanted a dialogue with oneself. And the form in which the writer is in dialogue with himself
is the essay. So we chose to have the essay. In this contest, we wanted the young people from all over the country to think about very essential, very germinal things. What should be the nature of education? What is the meaning of being human? What is a beautiful home? These were some of the topics which were set. And there have been, every time, more than 300 entries from all over the country. And out of those 300, through a rigorous process, 10 finalists are chosen to present and defend their essays. So you saw the 10 participants who are here this time. It is bilingual. One can write either in English or in Hindi, whichever language one is better able to express herself or himself in. The essay form, because it is a dialogue with oneself, it makes one go deeper into oneself. It is important that education should unfold the highest potential of the human brain. And the human brain needs to observe, needs to be both intelligent and compassionate. Just intelligence is not adequate. There's need for compassion along with intelligence. An essay has to communicate not just ideas, but ideas which are felt, ideas which are lived. That's what makes an essay different from just plain ordinary writing. So you will see how the people here who presented their essays, you saw them, and not all of them could. It's not possible for everyone to get the DAMODARSHREE award, but just the attempt, just the striving to excel oneself, to reach the heights. That striving is important. The chief guest today was also
the winner of University Debating Colors. And the year he won the University Debating Color, the color could be given to as many as qualified by reaching a certain standard. It's a different matter that only 2 people reached that standard. One in English, the other in Hindi. But even if the others did not reach it, they strove towards it. So, in an education institution, if we try not to have the competitive instinct, but the desire to cooperate, to share, to excel, to help each other reach excellence, that should be the aim. And the DAMODARSHREE is an attempt towards that end. And this college, dedicated to human values, is trying its best to nurture human values which are positive, which will create a beautiful, harmonious society. I don't know how long it will be possible for me to be associated with the DAMODARSHREE. I'm 82 years old now, and as long as I can, I do whatever little I can do, but perhaps time is running out, and I also want to give my time more to an altogether different kind of education, not of the mainstream, but a different kind of education in which I've been involved for the last 20 years. So I might have to withdraw from here and move to a village where I can do that kind of work. But my best wishes will remain with the college. May it prosper. May the DAMODARSHREE grow. Thank you. Thank you, sir, for this mesmerizing address. I request Dr. Archana Jyoti to kindly present shawl and memento as a token of gratitude to Professor Manas Mukundas for his untiring devotion as a Vice President of the DAMODARSHREE Local Committee. And now we move towards awarding
the second runners-up of DAMODARSHREE 2022 for their exemplary presentation of ideas and thoughts. I request our principal, Professor Lalima Singh, to kindly give away the award to the second runners-up. I request Dr. Vinita Mishra, Department of Medieval History, and Dr. Tanushri Roy, Faculty of Commerce, to kindly assist Professor Lalima Singh. The second runners-up of DAMODARSHREE 2022 is Ms. Diya Pradeep Saini of Mumbai University. The award carries a prize money of rupees 50,000. विजेता प्रतिभागी दिया प्रदीप सैनी को महाविद्यालय के द्वारा 50,000 का चेक, फ्लैग एवं दामोदरश्री कांस्य पदक से सम्मानित किया जा रहा है। And it's time to recognize and award the first runners-up of DAMODARSHREE 2022. I invite Dr. Asha Seth, Chairperson, Governing Body, SS Khanna Girls Degree College, to kindly present the award. I request Dr. Preeti Singh and Dr. Anuradha Singh to kindly assist Dr. Asha Seth. The first runners-up of DAMODARSHREE 2022 is Mr. Adarsh Singh of Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. The award carries a prize money of rupees 1 lakh. Congratulations, Mr. Adarsh Singh. आदर्श सिंह विजेता फर्स्ट रनर को दामोदरश्री रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदर्श सिंह और दिया प्रदीप सैनी को शुभकामनाएं। यद्यपि प्रतिभागियों में परिणाम के प्रति उत्सुकता होगी, लेकिन आप कृपया धैर्य बनाए रखें। दामोदरश्री 2022 के विजेता का नाम शीघ्र ही आपके समक्ष होगा। अब समय है द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि श्री विकास स्वरूप पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय भारत सरकार के साथ संप्रेषण का। आपने अपने वैदुष्य सशक्त व्यक्तित्व से अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर अपना अप्रतिम स्थान स्थापित किया है। समस्त विश्व आपकी प्रशासनिक सामर्थ्य के साथ साथ आपकी अदम्य साहित्यिक क्षमता का भी साक्षी रहा है।
ऐसे प्रज्ञा के धनाढ्य व्यक्तित्व से मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि आप अपने संबोधन से सभागार को उपकृत करें। Justice Arun Tandon ji, Professor Lalma Singh ji, Dr. Asha Seth ji, Mr. Amit Khanna ji, Professor Manas Mukundas, members of the Khanna family who are here with us today, distinguished guests, faculty members, and dear students. Let me say what a pleasure and privilege it is for me to join you all this evening. Because today we honor excellence, we honor creativity, and we honor critical thinking by felicitating the winners of the DAMODARSHREE National Award for Academic Excellence. It is wonderful to see the winners who have come from all across the country. We have just given an award to someone from Mumbai, someone from Bhopal, and I was telling Justice Tandon, the odds of an Allahabadi winning the #1 has increased dramatically now. And it is also very good that the topic chosen was such a topic which can appeal to anyone across the world. Are you there, God? क्या तुम हो भगवान? This morning, प्रोफेसर लालमा जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि विकास स्वरूप जी आज शाम को आपको जो बोलना है तो अच्छा रहेगा कि आप जरा बाइलिंगुअल बोलिए, हिंदी और इंग्लिश में। तो मैंने ऊपर देखा और कहा क्या तुम हो भगवान? मुझे 35 साल से जब से मैंने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की अंग्रेजी में लिखित पिटक कर रहा था, लेकिन पानी तो गंगा का पिया है, गंगा किनारे वाला छोरा, मुझे हिंदी में तो बोलनी। जब मैं इलाहाबाद में एक छात्र था, बॉयज हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो मुझे पुरस्कार समारोह बड़े पसंद थे, क्योंकि अधिकतर समारोह में कुछ ना कुछ प्राइज तो मुझे मिल जाती थी। समस्या ये थी कि हर समारोह में एक चीफ गेस्ट का होना जरूरी होता था, और मेरे अनुभव में ये जो चीफ गेस्ट लोग होते थे ये बड़े सेल्फ इम्पोर्टेंट लोग होते थे, हमेशा फैशनेबली लेट आते थे और इसके बाद बहुत ही लंबे और उबाऊ भाषण दिया। मेरे अनुभव में जो सबसे अच्छे चीफ गेस्ट मैंने अपनी जिंदगी में देखे थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही एक भूतपूर्व प्रोफेसर थे, जिन्हें प्रयागराज में एक स्कूल के वार्षिक दिवस की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनसे पहले कम से कम 12 अन्य लोग लंबे लंबे भाषण दे चुके। अंत में 2.5 घंटे के बाद मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट की बारी आई। एमसी मंच पे आए और उन्होंने घोषणा की, अब मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आकर अपना एड्रेस दें। तो मुख्य अतिथि साहब उठे, धीमे धीमे कदमों से मंच पर पहुंचे, देखा कि 150 लोगों में से 75 तो सो चुके थे, मुस्कुराए और बोले, हाउस नंबर 8 जीटी रोड, लूकरगंज, इलाहाबाद 211001, और तुरंत वापस जाकर अपनी सीट पर बैठे, क्योंकि उन्होंने अपना एड्रेस दिया। और वास्तव में सबसे ज्यादा वाहवाही उन्हीं को मिली। So I was also tempted to declare my residential address and be done with it, but I'm sure Lalma ji would not agree, because then I would not be fulfilling my duty, my dharma as the chief guest. And actually, being the chief guest at this function is a very pleasant duty because of 2 reasons. One, it has enabled me to return to my hometown, Allahabad, which has truly molded me into what I am. वो कहते हैं ना कि इलाहाबाद की मिट्टी में कुछ है, and you can take an Allahabadi out of Allahabad, but you cannot take Allahabad out of an Allahabadi. So it is always a pleasure to reconnect with my roots, and for a son, there can be no bigger pride to see his father in the audience when he is the chief guest at a function, and my father is very much pleased to hear this evening. The second reason why I accepted to be the chief guest is that tonight we not only honor excellence, we also honor the memory
of the President of the Saraswat Khatri Pathshala Society, the late Professor Damodar Khanna. आज रात न केवल हम उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं, बल्कि सारस्वत खत्री पाठशाला सोसाइटी के अध्यक्ष स्वर्गीय प्रोफेसर दामोदर दास खन्ना की स्मृति का भी सम्मान करते हैं। Professor Khanna was a tireless promoter of education among the masses, specifically the girl students, because he believed that the best way to empower them is through education and help them discover their innate potential. It is said that when you educate a boy, you educate an individual. But when you educate a girl, you educate an entire family. जब आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि अगर इस विश्व में महिलाओं का राज होता तो ये दुनिया कैसे दिखती, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, जब महिलाएं निर्णय लेती हैं या निर्णय लेने में शामिल होती हैं, तो समाज बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि महिलाएं सुनती हैं, संवाद को प्रोत्साहित करती हैं और आम सहमति बनाती हैं। इसलिए कम हिंसा और अस्थिरता और अधिक शांति होती है, क्योंकि परिवारों और समुदायों की सुरक्षा वो अपना प्रथम दायित्व मानती हैं। जब महिलाएं इंचार्ज होती हैं तो उनकी प्राथमिकताएं पुरुषों से बहुत अलग होती हैं। वे स्वच्छ पानी, बेहतर स्कूलों, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करती हैं। इस तरह महिलाएं अपने समुदायों को सशक्त बनाती हैं, अपने देशों को ऊपर उठाती हैं और दुनिया को बदलती हैं। One of the principal objectives of the SS Khanna Girls Degree College is to make the girl students self-reliant and economically independent. It also teaches them the philosophy of Ubuntu, एक साउथ अफ्रीका की फिलॉसफी है, which simply translated means I am because you are. मैं हूं क्योंकि तुम हो। The ethical values of Ubuntu ideology include respect for others, helpfulness, community, sharing, caring, trust, and unselfishness. So what the college is doing is not just preparing students to top the university or top the civil services. They are preparing empathetic and compassionate leaders of tomorrow, and that is what I see before me. So I thought I would talk to you today about what makes a good leader. एक अच्छे leader के क्या गुण होते हैं? Actually, I did a lot of research on this topic and eventually ended up writing a book, a fiction book called The Accidental Apprentice. I'm sure many of you would not have read the book, but don't worry. एक आध साल में उस पर वेब सीरीज आ जाएगी, and then I'm sure more people will be able to get acquainted with it. Now, I believe that a good leader must have 4 important attributes, what I call the 4 C's. 4 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए एक अच्छे लीडर में, जिन्हें मैं 4 C's कहता हूँ. The first C is creativity, रचनात्मकता. A good leader must be creative with new ideas and original thinking, which can inspire their team to greater heights, to do something which has not been done before. The 20th century was the century of manufacturing, but the 21st century is the century of innovation. Today, Apple has become the most valuable company in the world because of its ability to constantly innovate. A leader must therefore have the ability and the capability to think out of the box, to solve problems, and to find better ways of doing things. Now, there is a common misperception that creativity is only for the artistic types and geniuses. That creativity is something one is either born with or without. It has also been a long-held belief that people are either right-brained or left-brained, meaning they are either creative or they are logical. I personally do not believe in this left-brain, right-brain theory. I don't believe that creativity is the exclusive preserve of a chosen few. I believe that creative ability is something that exists in all of us, in greater or lesser degree. It's just that in some people, it remains dormant, while others have learned to orient the antenna of their mind to receive and channel creative impulses. As Thomas Dever said, minds are like parachutes. They were best when open.
You know, a singer could be born with a beautiful voice, but a writer is never born, because writing is about vocabulary, and a vocabulary is something you always acquire. It is not something that you are born. And the first step to tapping that source of creativity that lies in all of us is another C, curiosity, jigyasa. Apples had been falling on people's heads for centuries. But why did it take a Newton to discover the theory of gravity, Because Newton was curious. As William Hazlitt put it, millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked, why? So the mind is like a muscle. It becomes stronger with exercise. And there is no better mental exercise than curiosity. Curiosity is actively exploring your environment, asking questions. Now, we are living in a world of increasing complexity. Our brain takes in more information from our environment in a single day than the largest computer does in 1 year. That's how complex our brain is. And scientists say that in order to manage complexity, you need not just intellectual quotient and emotional quotient, not just IQ and EQ, but also CQ, curiosity quotient. When we are curious, we see things differently. We use our powers of observation more fully. A hungry mind is a prerequisite for successful innovation. When the mind is curious, new ideas can come from anywhere, from a random thought or an overheard conversation, from a bizarre dream or a beautiful piece of art, from a book, a newspaper, a piece of music, even a piece of rock. To take my own example, the inspiration for my first novel, Q&A, came from a news report which I had read in 1999 about a project called Hole in the Wall. ये एक बड़ा दिलचस्प प्रोजेक्ट था जिसमें NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो दिल्ली में रहते थे, कालका जी में, और NIIT के कैंपस से लगा हुआ था कालका जी का स्लम, और दोनों के बीच में एक कॉमन वॉल, एक दीवार के इस तरफ था NIIT का कैंपस, दीवार के उस तरफ था कालका जी का स्लम। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने उस दीवार में एक सुराख किया, एक गोल सुराख किया, और उसमें एक कंप्यूटर धकेल दिया, एक टच स्क्रीन के साथ, और फिर उन्होंने कहा कि अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब स्लम में ये कंप्यूटर आ गया है एक टच स्क्रीन के साथ। और उन्होंने पाया कि 3 महीने के अंदर जो स्लम में बच्चे रह रहे थे वो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब सोचिए, ये स्लम के बच्चे, ये कभी स्कूल नहीं गए, इन्हें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, इन्हें अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता, ये अखबार नहीं पढ़ सकते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड वेब को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये अब कंप्यूटर चला रहे हैं। तो जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी 1999 की रिपोर्ट, तो मेरे दिमाग में एक विचार कौन था, मैंने कहा if a slum kid can use a computer, then a slum kid can also participate in a brain quiz and win. So I juxtaposed these two themes of a game show and of a contestant who has had no formal education, who has street knowledge as opposed to book knowledge. उसके पास किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास जिंदगी का ज्ञान है. And that is how Q&A, which later became Slumdog Millionaire, was born. So the first C is creativity. The second C is courage, sahas. Courageous leaders lead their organizations in authentic and sustainable ways. They stick to their principles, are willing to innovate, make changes, and won't walk away when things get tough or difficult. Courageous leaders are prepared to hold steady and be absolutely clear on their values and principles at all times. They have the courage to stick to these even when the easiest thing to do is to compromise. They will always strive to do what is right rather than what is expedient. It is courage which builds capacity for taking risk, which is a necessary ingredient for growth, innovation, creativity, and success. But when you take risk, you also open yourself up to the possibility of failure. Good leaders do not fear failures. अच्छे leaders जो हैं वो असफलता से नहीं डरते. As Dr. Carol Dweck said, the word fail, F-A-I-L, means first attempt in learning. सीखने में पहला प्रयास.
Therefore, courageous leaders are more willing to fail in the pursuit of success, and they are more willing to try new things because they see their failures in a positive light as learning and growth as opposed to something negative and permanent. When Film 4 approached me to make a film based on my book Q&A, they were also taking a huge risk. I wrote this book in 2003. It was published in 2005, and I got that call in 2004, 1 year before the book had even been published. So जब मेरे पास कॉल आया फिल्म फोर्स से तो मैंने कहा भाई आपको पता कैसे लगा कि मैंने किताब लिखी, किताब तो अभी छपी नहीं। तो कहे कि नहीं, ये तो आपके पब्लिशर ने हमको मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी थी और हम तो इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स फिल्म बनाई उन्होंने, फिल्म आई जिसका नाम था स्लमडॉग मिलियनेयर, और फिल्म हिट हो गई। और उसके बाद से सब लोग मुझसे एक सवाल पूछने लगे कि भाई आपकी पुस्तक के ऊपर फिल्म बन रही है, what do you think about the film? And you know, that was a tricky question for me. Q&A was my book, but Slumdog Millionaire was not my film. And then I came across a brilliant parallel from a Bengali writer called Mani Shankar Mukherjee, one of whose books was made into a film by none other than Satyajit Ray. And he was asked the same question. Your film has been made into a book. Your book has been made into a film. What do you think about it? And he thought about it, and then he said, you know, when you give permission for your book to be made into a film, it is like giving your daughter away in marriage. The first thing that happens is your daughter acquires a new surname. Your husband ka surname. The second thing that happens is that you are saddled with a son-in-law. And then he said, remember, in India, you never ever speak ill-in-law of your son-in-law in public. And that is why you will also not hear me criticizing Slumdog Millionaire, even though, as I said, you know, the movie received a lot of flack, there was a lot of controversy around it. Anyway, we are on the subject of courage. So courage comes from confidence, Atmavishwas. To become a good and strong leader, it is necessary for a person to first of all have confidence in herself and then on the people around. No one follows a leader who is not self-assured or less confident. But this confidence should be based on a bedrock of diligent practice and hard work. The problem with today's instant noodles generation is that many people look for shortcuts to success. But there are no shortcuts in life. Great things take great effort to achieve. There are only two places where success comes before talent. One is the dictionary, where S comes before T. The other is Big Boss. Equally, confidence should not mean cockiness. A leader must always remain humble and accessible to all. She must have empathy instead of an ego in order to connect with other people effectively. The third C is communicate, Samband. Good leaders are good communicators who are able to motivate and energize their teams. Good leaders think with clarity and express their ideas and share information clearly. They say what they mean. They are direct, don't hide behind complexity or pile on a ton of information. As Albert Camus said, those who write clearly have readers, those who write obscurely have commentators. जो स्पष्ट रूप से लिखते हैं उनके पाठक होते हैं और जो अस्पष्ट रूप से लिखते हैं उनके टिप्पणीकार होते हैं. The key to being a good communicator is to be a good listener. When you listen well, you gain a clear understanding of another's perspective and knowledge. Similarly, to be a good writer, you have to be a good reader. Only reading can help develop your mind. Only reading can help develop the vocabulary, which is essential for effective communication. And that is why I always encourage students to read. The last and final C is contribute. Yoga. Good leaders give back to society. They contribute because they are compassionate, as Manasta has just told us. The world is a place of great diversity, but also great inequality. Those of you who are studying in this great institution are very fortunate, but there are millions of children out there who do not have the means to get a quality education. So at all times, we must show compassion to those in need. And this reminds me of the most important C for a speaker, conclusion, Ant. So let me conclude. You, the students of this great institution, are the future of our country. And you are fortunate
to be living in the most exciting era of inspiration and innovation in human history. Today, thanks to the information revolution, a poor young girl with an internet-enabled cell phone has as much knowledge at her disposal as a millionaire with 100,000 books in his library. And it is this democratization of technology that has unleashed the creativity of a billion Indians. You know, when I was posted as High Commissioner of India to Canada, I once met a Canadian oil executive who told me about the huge reserves of oil and gas and minerals in Canada, making Canada the country with the third highest total estimated value of natural resources. Then he turned to me and he asked, "So, High Commissioner, what is the greatest natural resource of India?" And it set me thinking. I thought about it for a couple of minutes, and then I told him that India's greatest natural resource is the Indian. भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन भारतीय, because it is through their diligence, work ethic, entrepreneurship, innovation, and commitment to rule of law and to family values that India is today the fastest growing economy in the world, and Indians today have the confidence to fight and win against any circumstance. When I was your age, it was a different India, where job opportunities were limited, entrepreneurial energies were shackled by the license permit Raj, and self-confidence was lacking. Today, we are no longer constrained by the burdens of the past. We believe that nothing is impossible. Kuch bhi asambhav nahi. And thanks to the SS Khanna College, you have been equipped with the tools to make the impossible possible. The motto of the college is the Vedic mantra, Anubhadraha Kritvo Yantu Vishvata. Let noble thoughts come to you from all directions. By allowing diverse thoughts come to you from all sides, you will lead the race for new ideas. You will be the innovators, inventors, artists, and entrepreneurs of the future. But remember, the best way to predict the future is to create it. So go ahead and create the future. Because today, there are no limits to creativity. The gatekeepers, the publishers, the middlemen have all been cut out. Digital media platforms are available everywhere, and we can all be creators of content, of stories and songs, of apps and products as easily as we were once simply consumers or downloaders. So go ahead and create your own stories. Create hope, create compassion, create understanding, create a better world. एक बेहतर दुनिया को बनाइए ताकि इसके बाद कभी किसी को नहीं कहना पड़े क्या तो भूला। Thank you. You certainly an enlightening speech. I'm certain it has kindled a new fire of academic enthusiasm and moral vigor in our students. The moments you spent here with us, dear sir, has left an indelible mark on our minds and heart, and we wish you take these precious moments with you to a token of remembrance. I request Mr. Amit Khanna, Secretary of Saraswat Khatri Pathshala Society, to kindly present shawl and memento to Mr. Vikas Swarup.